Okay, hi Aseem. Welcome back to my channel, which is Cinephile Sanket. और आज हम आपके फेस्टिवल को डिस्कस करने वाले हैं. I just want every information how a festival works actually, and you are the festival director of New York Indian Film Festival. So मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि मैंने यहाँ पे मामी अटेंड किया है, मैंने यहाँ पे आई थिंक मामी अटेंड किया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों. सो बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि हाउ अ फेस्टिवल वर्क्स एंड NYIFF for everyone to know that it is just round the corner. Like it is in May, from May 11 to 11th May to 14th. 14th. That's right. So वैसे so obviously इसकी तैयारी तो यार बहुत पहले से ही, सबसे पहले से ही हो जाती है, वैसे रहता है. सो लाइक आप मुझे बता सकते हैं जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि ये आप पहली बात आपका इन्वॉल्वमेंट कब से शुरू हुआ था NYIFF से, तो और कैसे मैं हुआ? फेस्टिवल डायरेक्टर 2011 में बना था, बट उससे पहले आई वाज इन द प्रोग्रामिंग टीम, which is what I head now also. So I was help कर रहा था मैं प्रोग्रामिंग के लिए, and then this position opened. The last festival director left, so then I put my hand up and said, "Can I get the job?" So ये मेरा 11th या 12th या 13th ईयर है, मुझे काउंट नहीं करना आता. Okay. I think it's 13th year this. हाँ. ओके सो ये जब जुड़े हाउ डिड कि कैसा था कि आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था ऐसा कि कुछ फिल्म फेस्टिवल को कैसे मैनेज किया जा सकता है कि कैसे आप जब भी ये आपको ये पोजीशन मिला आपकी फेस्टिवल डायरेक्टर, सो आपको कैसा कुछ था कि यू केम टू नो एज यू आर गोइंग कि ओके दिस इज द वे ऑफ फेस्टिवल शुड बी मैनेज, वैसा कुछ सर? So, I have to tell you first of all that I don't do this alone, even though my title is Festival Director. I have ओके. a very strong team in New York. A colleague of mine, Suman, who she's the executive director of this organization. So there's an organization called Indo-American Arts Council. वो उसका 25 साल हो गया इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल को न्यूयॉर्क में एस्टैब्लिश हुई थी. एंड द आइडिया बेसिकली वाज एंड स्टिल इज टू ब्रिंग इंडियन आर्ट्स टू न्यूयॉर्क. डांस कहिए, थिएटर कहिए, लिटरेचर कहिए, और फिल्म्स फेस्टिवल 2 साल बाद स्टार्ट हुआ था एंड हैज बिकम द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज सच. बाकी सारा साल भी कुछ ना कुछ चलता रहता है. डांस फेस्टिवल आएगा, उसके बाद फिर लिटरेरी फेस्टिवल आएगा. तो एक्सपीरियंस मतलब आई हैव बीन अ फिल्म जर्नलिस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड I used to go to various film festivals. अब देखिए, I go to festivals like Toronto and Berlin. आपने मामी की बात करी, but even मामी, those are much bigger festivals. Okay. And they are much, and these are international festivals. They're very, very big festivals. Our festival only brings in Indian films. And what we basically do is we have a submission process. Most festivals का यही होता है कि they ask you to submit films. So people submit films. So इस साल, for instance, हमें 216 film submission आई, जिसमें features भी हैं, documentaries भी हैं, shorts भी हैं, and I think we're showing about 35, 36 films in all, over a period of 4 days. And 3 साल के बाद we've come back to physical, because it used to be a physical festival. Pandemic हो गया तो virtual festival 3 साल चला, 2020, 2021, 2022 में. So submissions होती हैं, और उसके अलावा I travel to various festivals. अभी मैं बर्लिन गया था, अब न्यूयॉर्क के बाद मैं कान जा रहा हूँ, then I go to Toronto. So अगले साल के लिए फिल्म वहाँ देखनी शुरू करते हैं. वैसे भी बिकॉज आई एम अ फिल्म जर्नलिस्ट, तो आई एम अवेयर कि बाकी और क्या फिल्म्स बन रही हैं. लॉट ऑफ filmmakers approach me directly. They want to show me their film and ask me my opinion कि कैसी है, whether I'll consider it for our festival. So there is that goes on. I have a team of I think there are 6 or 7 programmers. हम लोग सितंबर अक्टूबर में देखनी शुरू करते हैं फिल्म्स, which then go on until by December 31st को we close our submissions.
early February we have to finalize. So it takes a very long time because all films have to be watched. And I'm in addition to 216 films, मैं at least 8-10 फिल्में मैं separately लेके आया. With, we are showing practically all of them. हम्म. Uh, जो so ओपनिंग various फिल्म festivals. है, द क्लोजिंग फिल्म है, आई थिंक, हाँ राइट, द थ्री ऑफ अस, वो आई थिंक आप हाँ लेके आए होगे शायद से. हाँ तो थ्री ऑफ अस मैंने गोवा में जो इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है एफी वहाँ देखी थी. ओके. And so we requested them, and it takes a while to negotiate and things like that. So we got that. Closing film जो है Goldfish, वो I had to ask for it. I had heard about it, and they sent me a link, and then I said कि submit कर लीजिए. तो उन्होंने submit करी तो वो closing film हो गई. Uh, so similarly, and then we are showing two films at least. No, we're showing three films, which are special screenings. So, एक तो there's a film called Gulmohar, which हम्म. is on Disney Hotstar. US में भी Hulu पे है, but we are doing the first theatrical screening of the film in New York, and Sharmila Tagore and Manoj Vajpayee will be there. And वाओ. because of that reason, we are also showing a brand new film of Manoj Vajpayee. It's called Banda. So we're going to do a world premiere of this film called Banda. And there's a documentary called Call Me Dancer. आपने नेटफ्लिक्स पे वो फिल्म देखी थी ये बैले, इट्स यस, वनीशू यस. बैले डांसर था. तो हम्म. उसमें जो दो एक्टर हैं, जो मनीष जो एक्टर है, ही इज प्लेइंग हिज ओन कैरेक्टर सेल्फ. And a documentary has been made on Manish Chauhan now, so we're showing that. That had already been shown in New York at this Lincoln Center में एक dance on camera festival होता है, but we decided to we'll have a special screening because there'll be an audience for that. The rest of the films, so the special screenings are not in competition. The rest of the films are in competition. We have a nominating committee. We have a separate jury. अभी jury बैठ के film देख रही है, which have been nominated, and I have no idea, क्या हो रहा है. Independently काम कर रहे हैं, and basically on the closing night on May 14th, we'll get envelopes like the Oscars, and we open them, and and if the filmmakers are there, we give them the awards or we send the awards to India. But film festival चलाने के लिए बहुत कुछ. It's not just about watching films only. ओके. That's a big part of the thing. Selecting films, it's very tough. When you have so many films, some very good films, we had to say no to because there was not enough space, and you have to balance also in terms of what kind of films to show. Different languages में दिखानी है, हिंदी में है, पंजाबी में है, मलयालम में है, मराठी film है, Tamil, Bengali. We try and cover the entire gamut of Indian film industry. Uh, then it's also working with. So the other films have been selected. Marketing होता है उसका. There's a whole team working there. Um, रोज के रोज promotion. If you go to our Instagram handle, we do a different slide every day about the festival. So New York Indian Film Festival का Instagram slide है. Guests आ रहे हैं, उनको बुलाना, उनकी टिकट बुक करना, उनके होटल बुक करना. There's so much work that is involved in running a festival, even a small festival like ours. ओह, ओके. So it's एक्चुअली exciting, बहुत मेहनत लगी. but मेहनत है और exciting भी बहुत है. ओके, इट्स क्वाइट इतने सारे एक्साइटिंग फिल्म्स देखना, और लाइक अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म्स को ना भी बोलना, लाइक आपने जैसे बोला कि वो कईयों फिल्म मेकर्स को. most फिल्म को तो ना बोलना पड़ा. देखो ऐसा है, there are always some films which are not good also, तो उनको तो ना बोलते ही है. Okay. मतलब और मेरे पर्सपेक्टिव से, हम लोगों के पर्सपेक्टिव से, I'm not saying कि I'm an expert. Some people might think it's a very good film, हमें नहीं पसंद आई, or we think our audience will not like it or something. तो बहुत साल से कर रहा हूँ, तो I have an idea about what my audience is like. उसके अलावा then it's a question of then we have to say no to some really good films also because there's not enough space. You have to weigh ये वाली दिखाएं, X film दिखाएं कि Y film दिखाएं. Correct. उसमें भी बहुत discussion होता है, and then we have to, it becomes, we regret that some films we have to say no to. But एक क्वेश्चन आया ultimately, है. Yeah, sure. Go ahead. Atika, is there a Bengali film being shown this year? Yes. So we are showing a film that was just released actually in Kolkata on Friday, Shesh Pata.
अतानु घोष डायरेक्टर है और उसमें प्रसेनजीत चैटर्जी plays a lead role. And then we are showing another a short film in Bengali called it is a premiere of that called Chitti, which is directed by her name is Baubali Chaudhary. I think her name is. She's also a script writer. Uh, uh, she wrote the script of Kai Poche and a few other films. This is the first film that she's directed. So we're Okay. showing that. I think those are the two Bengali films. Yeah. Okay. Oh no, But we have आप another लोग Bengali film. We have a film okay, called okay, Mushroom. It's a okay. thriller with the Bengali also. Yeah. It's a feature की like वो it's a short Mushroom is about an hour long, but it's a feature length. Yeah. फीचर ओके ओके बट असीम एक चीज पूछनी थी आपसे कि आप लोग में ऐसा नहीं होता कि जस्ट लाइक जैसे मामी में या फिर कैंस में आप देखते हैं किसी कैटेगरीज रहता है कि इट्स अ कैटेगरीज लाइक मेन कंपटीशन ऑन सर्टेन रिगार्ड्स और मामी में कैसे इंडिया गोल्ड इंडिया स्टोरी वैसे रहता है सो लाइक आप लोग में ऐसा लाइक रहता नहीं है अरे यार, कि I'm only showing 35 films. Yeah, we are a very small festival. I can't, ओके you know, we have competition and not in competition. Not in competition are आउट ऑफ three or four कॉम्पिटिशन films which are special screening. Otherwise, all films are in competition, and then उसमें से nomination होता है. So I can't do a certain regard a critics week, and I can't do directors fortnight and main competition. Like Cannes is a very very big festival. It's like the biggest festival in the world. So ओके that own small way we put together a very good festival. I like to believe ours is the oldest film festival in North America. This is the first one that started, and it's 23 years old. अब तो US में टोरंटो कनाडा में बहुत सारे festivals हैं और भी LA में बहुत मेजर बिग फेस्टिवल है इंडियन फिल्म फेस्टिवल लॉस एंजलिस लंदन में है यूरोप में और भी काफी सारे इंडियन फिल्म फेस्टिवल्स हो रहे हैं इन अ लॉट ऑफ वेज ours was the first outside India ओके also. Okay, so it's basically just targeting the Indian diaspora living abroad. Like, No, not necessarily. uh, We're showing films which will appeal okay, to all New Yorkers. okay, okay. I mean, we get No, a but substantial. showcasing just Indian films just to the audience in New York, like हाँ, Indian so films, but, right? but that's not just Indian diaspora. We get Okay. whites and blacks and Latinos and people of different Wow. ethnicities, Asians, because New York is a complete like a film center of the world, and there Okay. are various film festivals. There's an African film festival going on right now. There's a Jewish festival. German films का होता है, Italian films का होता है, Brazilian films का होता है. There are festivals that go on all year round, and ऐसा नहीं है कि अगर African films that only black people go see them. The thing is that other people also go see them because New Yorkers are interested in a lot of films. And Okay. I mean, I'll give you examples of Indian films. The Apu trilogy, Satyajit Ray's Apu trilogy, when the restored version was released about 4-5 years ago, 5-6 years ago, it ran for 3 months, and there were long lines. I mean, the shows were sold out. I mean, there's New Yorkers have a real passion for cinema. Uh, इंडिया में भी बहुत पैशन है पर इंडिया में वो स्टार्स का बहुत पैशन होता है कि सलमान खान शाहरुख खान रजनीकांत दैट काइंड ऑफ पैशन but New Yorkers are really interested in seeing films of different cultures, different countries, subtitles, and we want everybody to come. Indian diaspora तो आएगा ही, वो तो हम जानते ही हैं. वाओ दैट्स क्वाइट एक्साइटिंग क्योंकि मुझे ऐसे फिल्म फेस्टिवल्स अटेंड करने का बहुत अच्छा लगता है जब भी मुंबई में ऐसा कुछ होता है तो जब भी लाइक आई विश ऐसा कुछ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हो आई थिंक हो रहा है यहाँ पे मुंबई में आई थिंक मामी दिल्ली में फिर भी से हो आप रहा है. लोग मामी मामी फिर फिर से से हो हो रहा रहा है. है हाँ एग्जैक्टली हाँ अक्टूबर में लेकिन बहुत सारे डेलीगेशंस यहाँ पे रखते हैं लाइक उनके फिल्म फेस्टिवल्स काइंड ऑफ जैसे लाइक कोरियन रखते हैं जापानीज रखते हैं यहाँ पे आई थिंक रशियन भी रखते हैं सो उनके जो डेलीगेशंस होते हैं यहाँ पे वो रखते हैं लेकिन हाँ. आप लोग उनका काम कर रहे हैं और लाइक आई थिंक इट्स quite amazing quite interesting to see that like guys who like you who are creating an awareness about Indian films to the nations who's completely unknown might be completely unknown of India as well like Yeah, so उनको आप India दिखा we रहे हो get first time viewers who've never seen Indian films, and then there are people, New Yorkers, white people or Latinos or blacks, and they come to see Indian films, they see Indian films, and they want to see more. And हम उनको दिखा क्या रहे हैं? These are mostly
we show mostly independent films, small films, and different languages में ये नहीं कि Bollywood ही है. Bollywood तो दिखाने की जरूरत नहीं है because Bollywood films, Pathan etc. get released in theaters. So we don't have to show, सलमान खान की जो नई फिल्म रिलीज हो रही है ईद के दिन, तो वो दिखाने की जरूरत तो है नहीं हमें, वो तो लोग देख ही लेंगे न्यूयॉर्क में. वी आर शोइंग films which did not get a chance to be released Okay. in theaters in the US. And आजकल तो OTT platforms भी बड़े restricted हो गए हैं. They want very mainstream kind of films. So, to get a Marathi film or a Bengali film which is a very closer to reality, which tells real stories, that's our idea basically. That we need to show those kind Okay. of films. So every year ऐसे ही होता है कि like it's you're finding those stories which are not quite popular, which will not be popular in India as well, like जैसे I would say कि कोई भी ऐसा कोई अगर फिल्म हो just No, but उतना I reach don't. ना मिले. I'm sorry for cutting you, but I don't agree with you. Not popular in India also because आजकल a lot Okay. of these independent films that I'm showing, they will go to MAMI, they'll go to other festivals, some will get theatrical release also. Okay. Especially regional language. मैंने बताया आपको शेषपता दिखा रहे हैं, अभी वो रिलीज हुई है फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को रिलीज हुई थी कलकत्ता में. Okay. तो we are not showing like some really yesterday, but they are independent films. I keep mentioning Shah Rukh Khan. I mean, I'm a big fan of Shah Rukh Khan, but we don't show Shah Rukh Khan's big popular films because that is, there's no brainer in that. That people वो तो release हो ही जाएगी. Okay. So like coming back, like एक क्वेश्चन मुझे था कि just आप लोग का like आपका क्या विजन है just to take this on a much bigger level as well. So आपका क्या like विजन है to New York Indian Film Festival के लेके से? So big level का ये होता है कि we obviously want more audience but then um, it's very expensive to put up a festival like that because we need sponsors. We have to bring in artists from India, from other parts of the world. Also, we have a director flying in from London. We have a director flying in from Toronto. So and, some people are coming from California, but majority people are coming from India. So we are doing our best to, and New York is such a big city and there's so much competition in terms of every day new films, new festivals चल रहे होते हैं. So we're competing with a lot, and now we are competing with OTT platforms also and big Bollywood films also. So I think in our own little way we are doing it very well. I mean, we could definitely do better. Uh, you know, we got to fill up the theaters. We got to bring the audience. Then we do conversations about the films between the filmmakers and the audience. So वो सब करने के लिए, it requires a lot of effort, and we have a whole team that does this work. मैं अकेला नहीं करता हूँ. अभी काम चल रहा है. In fact, after I end up speaking to you, there's a lot of emails to be sent today itself, and because you see, in New York में तो अभी दिन हुआ है, यहाँ पे रात हो गई है इंडिया में. So like I think it's quite hectic for you as well क्योंकि आप इंडिया में रह के just न्यूयॉर्क का जो काम करना रहेगा वो करना मैं रहता है. जा रहा हूँ like it's न्यूयॉर्क. मैं मंडे को जा रहा हूँ न्यूयॉर्क. okay, I have to be. that would be great. No, I have to be Yes, there yes. because I can't do it all. Correct. That's right. So just एक चीज like लास्ट चीज पूछनी थी और like उसके बाद एक फाइनल क्वेश्चन था मेरे से. like फेस्टिवल के बाद आपका क्या प्रोसीजर रहता है, क्या प्रोसेस रहता है कि जस्ट अभी खत्म हो गया, सो व्हाट्स योर थिंग कि अभी ओके इसके थोड़े महीने बाद अभी रेस्ट है फिर जाके फिर से शुरू करेंगे कि like एक बार हाँ तो तो अभी तो हो गया. हाँ मतलब because हमारा IAC will be very busy because then they start planning for the dance festival and the literary Okay. festival. I don't get very involved in that. IAC is the Indo-American Arts Council, the organization, the umbrella organization बोला था. Okay. I start to do other things. मैं in fact 14th को हमारा फेस्टिवल न्यूयॉर्क में खत्म हो रहा है. 15th को मैं कैंस जा रहा हूँ, कैंस फिल्म फेस्टिवल के लिए, and I'll be there until the 28th को मैं इंडिया वापस आ रहा हूँ. And so आप वहां पे भी कांस में भी लगे ये so NYFF के इसे करते. I'm aware of. Well, I'm going as a film journalist, but I'm Okay. aware दो Indian films दिखा रहे हैं. In fact, one we were considering showing it at our festival, a film called Agra, but उनको वहाँ पे admission हो गई, वहाँ पे selection हो गई थी, तो then we couldn't show it. तो और दूसरी अनुराग कश्यप की फिल्म है.
Um, but I'm also, it's not like one doesn't take a rest because people keep sending me films. Ke dekhiye, please, suggest something to us, suggest some festivals. Can it play at your festival? Can you recommend it to other festivals? So काम चलता रहता है यार. Okay. And I continue working as a film journalist also. Hmm. I actually program another film festival in Pittsburgh. That's end of September. It's an Asian film festival. So we look at Asia from Turkey all the way up to Japan, including, of course, India, Pakistan, India. Bangladesh, South Asia. Show about 10 films Hmm. there. So Hmm. उसका भी काम चल रहा है in terms of selection right now. Wow. So you are the programming in the programming committee. I'm the programming consultant there. Festival director का title नहीं है, वो इधर है. Hmm. And that New York being a festival director is a lot more uh, work involved. But the programming consultant, I've done programming consultancy for many festivals. Uh, you know, Macau में एक international film festival चला था 2-3 साल, so I worked there. Malta, which is a small island in the Mediterranean, they had an Indian film festival. I think 2018 में हुआ था. Um, and in India, I've worked with other festivals also. So Okay. I continue Okay. doing that. That's great to hear. Like I think ऐसे films को champion जरूर करना चाहिए और like आप जैसे लोग ऐसे films को champion करते हैं. I think the three of us अभी जब भी आ रहा है मैं खुद उसके लिए बहुत excited हूँ. Like जब भी उनका poster release हुआ था तब मैं खुद excited था कि अभी ये film कब देखने मिलेगी. So बहुत अच्छी फिल्म. invite. ओ वाह आपने देख ली है. I think आपने बोला था इफी में देखी है तो मतलब अरे सच अगर में भी. भाई देखो ऐसा है, आई एम द फेस्टिवल डायरेक्टर. मैं जब तक देखूँ ना फिल्म तो हम प्रोग्राम नहीं करते. तो Wow. I've seen all the films we're showing. I mean, my team has also watched, but I had to see it because I so वो तो मैंने गोवा में देखी Definitely. थी. हाँ. ओके ओके सो ऑब्वियसली ये आप तो ज़्यादातर बोल भी नहीं सकते कि मैं ये मुझे और ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि वो ज़्यादा रहता है कि लाइक ओके इसको आई थिंक वो कमिटी इंडिपेंडेंट ही होती है राइट जो ज्यूरी जैसे हाँ, आपने जो पहले वोटिंग भी कर बोला. रहे हैं, आई हैव नो आइडिया वो उनको क्या पसंद आएगा. इट्स क्वाइट पॉसिबल दे ओके. माइट लाइक दिस. देयर आर अदर फिल्म्स दैट देयर आर बीन नॉमिनेटेड फॉर द डायरेक्टर, एक्टर्स, screenplay, best film category. So I don't know how they'll work. And I only get the final vote. I don't know how many people voted for which film. Okay, So, okay. Oh, that's so great of. Okay, so just to wrap this up, obviously एक सिनेमा चैनल है मेरा. मैं सबसे एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछता ही हूँ और आपसे भी यही पूछूंगा कि जस्ट कौन सी एक बहुत अच्छी फिल्म आपने अगर रिसेंटली देखी हो, जस्ट उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि कौन सी मुझे बहुत आपको बहुत अच्छी लगी हो. आपने रेयर विंडो के बारे में तो ऑब्वियसली गए साल बात की थी हमने लेकिन और भी कोई एक अभी रिसेंटली बहुत अच्छी I, दिखी हो. there's a new film which is most probably opening in India also on 28th. It's called Polite Society. It's a British, sort of Pakistani, British South Asian film, and Okay. it was at Sundance. If you look for the trailer for Polite Society on YouTube, it's a story about two sisters. It's a Pakistani family, although the girls who are playing the roles are of Indian origin, and one wants to become a martial art and what's the people who do the action sequences in films. Um, The action director, she wants stunt to become a stunt coordinators. woman. Yeah. Yeah, stunt woman. And her sister, who was an artist, has left art school और उसकी arranged marriage हो रही है. And so the younger sisters can suspect कि कुछ problem है. But it's a lot of fun, a lot of martial arts, a lot of comedy. There's a touch of Bollywood. There's a great scene out of Devdas. So it's called Polite Society. Okay, let's hope. I think Universal Pictures यहाँ पे ला रहे हैं. मैंने just Yes, अभी देखा. Focus Universal रिलीज कर रहे हैं. इट्स ओपनिंग इन यूके एंड यूएस आल्सो 28. तो मैंने पढ़ा था कि इंडिया में भी 28 को रिलीज हो रही है मोस्ट प्रोबब्ली. Wow, I'm looking forward to it. आपके या like इतने views से आपने बोला है like उस फिल्म की तारीफ की तो definitely मुझे ये check out जरूर करना चाहिए. Yeah, absolutely. So thank you so much Aseem and all the best to थैंक यू. you. आपको आपके आने वाले दिनों के लिए बहुत बहुत like all the best क्योंकि आपको बहुत अभी stress रहेगा. Just छोटा सा film festival भी है लेकिन बहुत रहता है like like बहुत मेहनत रहती है. Just आपने इतने पूरे वीडियो में आपने describe किया. So thank you so much for coming to my थैंक यू. channel and speaking about थैंक your यू. little festival. And hope I also get to see the three of us as well very soon. Like You should get to see it pretty soon. Yeah. Yeah. yes, So, absolutely. Thank you so much and all have right. a Thank safe you. flight as well on Monday.